इंडिया में ये बहुत पॉपुलर केस भी हुआ था। राजू उनको वो पिल दे देता था कि दिस इज फॉर स्टॉपिंग प्रेगनेंसी, और वो शी वुड टेक दैट पिल एंड दैट वाज साइनाइड. He killed more than 20 women. एड केम्पर हैड अ हाई IQ एंड मैजिक शो में वहां पे देखा कि वो हेड कट कर देते ना मैजिक शो में. हाँ. His fantasy grew up from those days. Ed Kemper says, when I was cutting body into pieces of equal size, it was hard work. Nobody appreciated. Dark triad is also something very interesting. There are companies which screen people for such traits. Lawyers, advocates, politicians, actors are psychopaths. They are not hurting or taking away lives. In the army and the special forces, etc. It is possible that there are psychopaths there. When you gaze into abyss gaze back into you. So you know that. Dahmer तो I thought मतलब at least जो projection दिखाई है उसकी was sentimental about his victims. Charles Manson तो was killed. No, he was a cult leader. Cult leader, but also मतलब clearly psychopathic. He influenced young students go and kill a Hollywood actress, Sharon Tate. Osho seems to have similar characteristics. Mr. Gill, welcome to the show. Thank you, sir. It's a pleasure. I've been seeing you till now. Now I get to see you face to face. And it's very interesting when you say that you see me, because you really see from the eyes of a psychologist. और आपने बहुत काम भी किया हुआ इस फील्ड में. आपने इंटेरोगेशन, आपने फोरेंसिक साइकोलॉजी, वर्क विद सीरियल किलर्स, क्रिमिनल माइंड, बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. डिड आई मिस समथिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग यू हैव एक्सपीरियंस? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डोमेन में रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, उसमें रिपेट्रिएशन, उनकी काउंसलिंग, यस. बट आपने बहुत कवर कर लिया है. पर हाँ, डायरेक्टली मैंने विद सीरियल किलर्स वर्क नहीं की है. बट हाँ, इट इज अ टॉपिक दैट सॉर्ट ऑफ गेट्स पिक्ड अप. इट गेट्स पिक्ड अप. एंड इस पे मुझे आपकी बात पे एक लाइन याद आती है शर्लॉक होम्स की, वॉटसन, यू सी बट यू डोंट ऑब्जर्व. राइट. So that's where I started from. I started seeing. Very interesting. आपने देखना और सोचना स्टार्ट करा, और मेरी भी फैसिनेशन है साइकोलॉजी से, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आप पे, क्योंकि आपने किया हुआ है. You've done things. I've read things, extrapolated them, used my intuition to assimilate whatever I could. और एक चीज़ जो मुझे समझ में आई ना साइकोलॉजी पढ़ के, फिजिसिस्ट जो होते हैं ना, उनके लिए ब्लैक होल्स बहुत इंटरेस्टिंग है. Right. They are obsessed with them. Because they break the laws of physics. The same way, psychologists के लिए psychopaths बहुत interesting है. Serial killers बहुत interesting है. Because that is what happens when it is an extreme aberration of everything that is considered normal is broken. That's right. Okay. I like the analogy also for the black hole where all these principles get broken. Yeah. That's right. It's an aberration. And interestingly, depends from which side of the table that you're looking at. Are we an aberration or are they an aberration? Starting from there. And for psychopaths or serial killers, for a lot of studies and researches, they say कि young age की conditioning से, उनकी upbringing में, there's a change that starts coming in early days of it. Right. बहुत early days fantasies होती है. और उसकी भी 7 stages of होती है for serial killing as per Joel Norris. जो अगर आप बोलेंगे तो बाद में मैं वो explain कर दूंगा. But it is very early days of it, and I think अब तो सारा OTT platform भी बहुत कुछ इसी सारे content से भरा हुआ है, because we have a bias for negativity. Yeah. Negativity bias. हमने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि 100 लोगों की डेथ हो गई इस रीज़न से, 200 लोगों की, वो हम ज़्यादा पढ़ लेंगे in comparison to 10 लोग बचाए गए because of this drug. We are more wired to see the negative. Yes. The negativity. So we get driven. And you know, regardless of the reasons of it being interesting, it is interesting because psychopaths are not normal. There is nothing going on, जैसा आप कहते हैं. There is nothing going on. This is the opposite of, this is what makes us human. That's right. Or what I find fascinating about it, among other things, is that एक तो psychopaths are extremely successful at what they want to do because they are so agenda driven. उनके वो लिमिटेशंस होते ही नहीं है जो हमारे हैं. एम्पैथी है ही नहीं. That's right. See, जैसे आपने कहा कि जो जैसे हमारे एजेंडा होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि there is no horn effect कि आपको दिखेगा नहीं. They're in midst of you. They're like everyone.
और आपको अलग से नहीं पता चलेगा कि ये शायद साइकोपैथ है या हो सकती हैं, बिकॉज दे लाइक एवरीवन. सी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन ही ये है, परसोना मीन्स अ मास्क, एवरीवन वेयर्स अ मास्क, और वो उसी मास्क में है, एंड they look like one. Now, these psychopaths are intriguing, one, because OTT platforms se pehle nobody was talking much around it. They were only there in textbooks or in news. But now there are shows made around it. Yeah. And there is a difference in the brain. Majorly, there is a difference. Some of the studies say कि उनका जो amygdala है, उसका जो साइज है, which is responsible for your fear, stress, aggression, anxiety, is relatively smaller, so they can't feel it. There is nothing happening. लेकिन हाँ, आपके इमोशन को मिमिक जरूर कर सकते हैं. They can mirror. Yes. They can mirror, so you feel their feeling, but there's nothing there. और साइकोपैथ की जो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने मास्क बोला, मास्क इज द करेक्ट वर्ड टू यूज बिकॉज Yeah, द बुक आई थिंक बाय जिम रॉन इज मास्क ऑफ सैनिटी. that's right. And it is a mask. They learn to put on that mask a lot better because I think at some point उनको भी realize हो जाता है कि we are not normal. आपने वो भी कहा कि there are stages of psychopathy. Right. Malevolent psychopathy, violent psychopathy that turns into serial killers. बचपन से exhibit करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ टेंडेंसी, जैसे कि एनिमल डाइसेक्शन. ये एक थियोरी थी, मैं इसको फिर से शेयर कर देता हूँ, जो जे मैकडोनल्ड ने दी थी, एक साइकेट्रिस्ट ने दी थी, और उन्होंने 3 मार्कर्स बोले थे, क्योंकि आपने इसको मेंशन किया है. तो देखिए, एनिमल्स पे कई लोग स्टोन पेल्टिंग कर देते हैं, डॉग्स पे, कैट्स पे, वो एक अलग बात है. लेकिन उनको मार देना, म्यूटिलेट कर देना और बैडली इंजर्ड कर देना इज़ अ रेड फ्लैग. ये तो नंबर 1 है. नंबर 2, जहाँ भी मौका मिला वहाँ पे आग लगा देना, सेटिंग अप अ डेलिबरेट फायर, दैट इज़ नंबर 2. एंड नंबर 3, बच्चे की बेड वेटिंग रुक गई है 1-2 साल में, 9-10 ईयर्स में फिर से बेड वेटिंग वापस आ जाती है. दे से इट इज़ इमोशनल रिग्रेशन, कोई उसको इमोशनल ऐसा ट्रॉमा हो रहा है जिसकी वजह से वो वापस बेड वेटिंग कर रहा है. सो ये मैकडोनल्ड्स के ट्रायड में आता है. सम पीपल सेड कि ज़रूरी नहीं है कि कोई तीनों इंडिकेटर दिखा रहा तो वुड बी अ साइकोपैथ, बट अ लॉट ऑफ साइकोपैथ शोड देम. सो बट इट्स नॉट अ श्योर शॉर्ट वे टू से कि ये साइकोपैथ बनेगा, पर ये रेड फ्लैग्स हैं. एंड वो 7 स्टेजेस हैं फॉर सीरियल किलर्स, इफ यूड लाइक टू नो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. हम जोएल नॉरिस की बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन है ऑरा. We'll not go by the literal definition of it, aura. So aura में when the child is growing up, मैं एक नाम लेता हूँ, Ed Kemper. Ed Kemper had a high IQ. अच्छा, सारे साइकोपैथ्स की हाई IQ नहीं होते, वो एक मिसकंसेप्शन है. उसमें ग्रीन रिवर किलर का IQ बिलो एवरेज था. तो एड केम्पर हैड अ हाई IQ, और वो बचपन में जाके उसने कोई मैजिक शो देखा, एंड मैजिक शो में वहाँ पे देखा कि वो हेड कट कर देते ना मैजिक शो में, एंड बट द हेड डजंट गेट कट. राइट. सो ही गेट्स अ लिटिल सैड. ही सेज कि आई विश द हेड वाज कट ऑन द प्लेट, इट वुड हैव बीन सो नाइस, देन आई वुड हैव हैड द कंट्रोल. हिज फैंटेसी ग्रू अप फ्रॉम दोज डेज. एंड फिर वो ऑरा, द फर्स्ट स्टेज इज ऑरा, द अर्ली डेज फैंटेसी, sexual violence, imagination, and sometimes childhood trauma, parental violence का भी subjection. Not everybody becomes like that, but that is one. Right. Okay. Right. The second is, after this fantasy, the second is trolling. Trolling. आपको select करना है कि किस victim को मुझे stalk करना है, किसको kill करना है. That's the second phase. So they'll decide. And उनका भी कोई particular type of victim होता है. जैसे टेड बंडी, ही वुड ट्राई टू फाइंड विमेन जिनका मिडिल पार्टीशन, ब्लैक हेयर, ऐसे करके एक पैटर्न होता है उनका दैट दे पिक अप. एंड उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर्स होते हैं. सो वो उसमें करते हैं, ट्रोलिंग में. फिर थर्ड आता है वूइंग, जस्ट द वे यूड लाइक टू वू रोमांटिक पार्टनर, और वो उसको करते हैं. बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में देयर वाज नो टसल बिटवीन देम, बिकॉज द पर्सन हैड ऑलरेडी बीन वूड, तो इसीलिए उसने उस पर रेजिस्ट नहीं किया. फोर्थ इज कैप्चर, और फिर जब उसको पकड़ लिया, देन फिफ्थ इज मर्डर. सिक्स्थ इज टोटम, TOTEM. टोटम में ट्रॉफी लेके जाते हैं. इट कुड बी अ वॉच, इट कुड बी देयर अंडरगारमेंट्स, इट कुड बी ring, anything as a sign. Who was the serial killer who actually built a shrine
आउट ऑफ द विक्टिम्स बॉडी पार्ट्स, अभी एक OTT वो सीरीज बनी उस पे, जेफरी डामर, डामर, इट वाज डामर, स्कल्स का एक श्राइन बनाया हुआ था उसने. So it is their way of keeping them forever with them. Yes. And also वो जो ornaments है वो जो रख लेते हैं अपने पास, that is their way of saying कि I want to relive that same experience over and over again, and sometimes wherever that they have killed them, they'll go back to the same site. Yes. That also they do. Yes, they do that. It gives them that gratification. Yeah. And the final stage is 7th, depression. Once all of this is done, the adrenaline wears off, and then again they go through that depression. Some of them are suicidal in that phase. After that, they wait and they might start off hunting again. Again, going back into the stage of aura and trolling and wooing and capture murder, so on. But it's a cycle. That's how it goes. It's a proper addiction. हाँ, it's a proper cycle that a person goes through. इंडिया में ये बहुत पॉपुलर केस भी हुआ था. साइनाइड राजू, आई थिंक. अच्छा. साइनाइड राजू. सो वो लोगों वेमेन को प्रॉमिस करता था शादी के लिए, और फिर उसके बाद उनको लेके जाता था. ही वुड मेक रिलेशंस विद देम, और फिर उन्हें बोलता था यू शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट, और फिर उनको वो पिल दे देता था कि दिस इज़ फॉर स्टॉपिंग प्रेगनेंसी, और वो शी वुड टेक दैट पिल एंड दैट वाज साइनाइड एंड शी वुड डाई. एंड ही वाज अ स्कूल टीचर. सो अ रेगुलर स्कूल टीचर हु वाज वेरी गुड इन नेचर, how would he go and do something of that kind? He killed more than 20 women. He killed more than 20 women. And he would travel a lot to do that. He would take time. वो जो trolling वाला phase है ना, go long distance, select a particular victim, he would take a lot of time in doing that. और इनको मज़ा आता है इसमें. हाँ, उसमें उनको मज़ा आता है. उनको मज़ा आता है. उनका स्टिमुलेशन उससे होता है. He kept the jewelry, जो टोटम वाला स्टेज जो आप टोटम मैंने बोला, so वो jewelry रख के, that's how they get caught also later on. Yeah. Because of those totem, those souvenirs that they take. See, आप और मैं जब कहीं सेशन लेते हैं, we do training, we feel happy with the plaque, mementos that we get, because that is our hard work. For them, it is their hard work. Ed Kemper says कि when I was cutting body into pieces of equal size, it was hard work. Nobody appreciated. That was totally out of the context, but that is what he meant. He said कि मैं इतनी मेहनत से काट रहा हूँ. And he really got fed up of his mother. His mother used to, they say absent father and nagging mother brings a problem in the child's behavior. They don't become a serial killer, but brings a problem. Father is not there because of whatever reason, and the mother keeps nagging the child. There'll be a problem in the child's behavior. ये जॉन डगलस एंड रॉबर्ट के रेसलर ने अपनी स्टडी, अगर आपने माइंड हंटर्स देखी, ऑफ कोर्स द FBI एजेंट हु डॉक्यूमेंट करा इन्होंने सारा. Absolutely. So Robert K. Ressler ने ही टर्म दी थी serial killer. So they said this is a perfect recipe for a child going aberrant if the mother is nagging and the father is not there for his emotional responsibilities. Do you want to know who you really are? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? These things are unlocked when you understand personality. साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है. दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनालिटी टेस्ट है बिग 5. ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग फॉर फ्री. वी हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस. वी हैव क्रिएटेड द टेस्ट. द टूल इज देयर. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज गो अहेड, यूज इट, स्प्रेड द अवेयरनेस, become more self-aware. Thank you and all the best. Serial killer तो चलो is an extreme version of that problem, but आपने बीच में एक word use किया था, triad, dark triad. Yes. Dark triad is also something very interesting. और अब normal psychology की parlance में वो आ चुका है. और वो triad क्या है? So we talk of narcissism. So there are companies which screen people for such traits. Yeah. There is Machiavellism. Right. So where a person can be manipulative and in order to get their work done. So that also happens. So yeah, and there's one more which I'm not remembering, but narcissism, Machiavellism and one more. That is a dark triad. और ये dark triad की tendencies सब में होती हैं, but अगर pronounced हैं तो
you might not be a psychopath, but you have the dark triad. और dark triad मैंने ये भी देखा है, in fact the reason that I got interested in psychopathy and criminal behavior as such is because I thought that ये इतना successful क्यों है. बहुत बारी even in public life, lawyers, advocates, politicians, actors are psychopaths, can be psychopaths and very successful ones. Corporate world में बहुत मिलेंगे आपको. ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे भी गए कि दे कैन बी फाउंड बट दे आर नॉट हर्टिंग और टेकिंग अवे लाइव्स. एंड ये जो टर्म है, जो साइकोपैथ है, ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज कर दिया गया है कि उसका कई जो उसका डेफिनेशन है DSM-6 के हिसाब से जो है वो एकदम वो अलग चीज़ है. दैट्स राइट, वो डिस्टॉर्टेड हो गया है. वो डिस्टॉर्टेड हो गया है. व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से इज दैट दे आर नॉट फीलिंग एनीथिंग and they are ready to go to any length to get their work done. That's what they're trying to get at. You know, मैं आपसे बात भी कर रहा था उससे पहले, ये जो sometimes I talk to people who have seen a lot of combat in the army and the special forces etc. और वहाँ पर जब मैं कभी कभार ऑफ स्क्रीन उनसे बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ उनसे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के साथ मिला हूँ ऐसा, बट इट इज़ पॉसिबल दैट देयर आर साइकोपैथ्स देयर. दिस साइकोपैथ वुड बी अट्रैक्टेड टू दैट प्लेस, टू दैट सिचुएशन, टू दैट एनवायरनमेंट. वो बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करेगा शायद, बिकॉज अमिगडाला अगर छोटा है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसका है ही नहीं, काम अंडर कॉम्बैट, कूल एज अ कुकुम्बर जिसको हम बोलते हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है. समथिंग, फिर वो ट्रेनिंग के साथ फिर डिसेंसिटाइजेशन, राइट, एंड फिर लेवल ऑफ एक्सपोजर, दैट मेक्स अ डिफरेंस. देखिए, जब आप ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं एट द एज ऑफ 17-18, द ब्रेन इज स्टिल forming and shaping up. It gets shaped by the age of 25 years. तो उस formative age में whatever that you get exposed to and trained to and desensitized to, it becomes a new normal. John Douglas and Robert K. Ressler said कि when we tested on that psychopathy test, we came very close to being psychopaths ourselves. Right. Friedrich Nietzsche has said, when you gaze into abyss, the abyss gazes back at you. The abyss gazes back into you. So you know that, and that is how it is. Yeah, it's very interesting. तो आपकी practice में, sir, has the abyss ever stared back at you? Oh yes. Because see, when you deal with such cases, and when you talk to people, that energy, that vibration does rub onto you in terms of you. If you are that kind of person who gets into the skin of it, it will rub you somewhere. I'm sure you've heard of this. How do you get ahead of crazy if you don't know how crazy thinks? Sure. Then you have to think like one. And when you think like one, then you become like one. It has an impact. Emotionally, it does rattle you. वो फर्क पड़ता है, बिल्कुल. And sometimes you feel for the victims also. जब आप feel करते हैं तो you want to do, and there is a system through which that they have to go. So there are times you can do, limited. But yes, it does have an impact. It gives you sometimes nightmares. It gives you anxiety. It's a part of the work. I will admit something. I see a psychopath or I hear about one, and I realize what they have been able to do. I have to admit that there is a sense of admiration for the fearlessness. That's what I'll say. I will not say that I appreciate or endorse anything that they do, but the fearlessness. I wish I had the fearlessness along with the ethical morality and the backbone that I have, then I would be a lot more unstoppable, I think. तो उनकी वो जो फियरलेसनेस है ना, कि और एक तो सिर्फ फियरलेसनेस नहीं, दी शेयर करेज, बिकॉज मैं क्योंकि साइकोपैथ नहीं हूँ, एज फार एज आई नो, कैन ओनली अप्रिशिएट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब सोसाइटी को उस हद तक रिजेक्ट करना, डूइंग समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल, अनस्पीकेबल, अनथिंकेबल, ये लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे और हमारे बीच में रह के. I like the fact जो आपने कहा कि that fearlessness with that bone of ethics. That's right. But at the same time, they do not know the effect of their actions that will have on the
victim's family or others, so they do not know that. ये तो है प्रॉब्लम. वो उसको Empathy डिटेक्ट नहीं नहीं कर सकते, वो एम्पथाइज नहीं कर सकते, वो वहाँ पे फीलिंग नहीं है. सो वो फियरलेसनेस के साथ वो इमोशनल एलिमेंट भी मेजर मिसिंग है. सो समथिंग दैट प्रॉब्ली यू वुड वांट इज पीपल फ्रॉम फोर्सेस, that bone of fearlessness and that ethics to go ahead and do it. For them, they are struggling, as I said, no? उनका भी एक डिप्रेशन उनका आता है. There is a mental tussle that is going on. हाँ. वो उसमें हमेशा रहते हैं. हाँ. Ed Kemper says there is one side of me, he was never able to date a girl because he was 6 feet 9 inches tall and he was I think 160 170 kgs. So he was very tall and broad. His mother used to nag him and say कि you will never be able to get a girl for yourself. Ed Kemper is the clown killer, na? No, that is John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. So हाँ. Ed Kemper is the one who had women's shoes. ये क्या था उसका? Oh, Jeremy Brudos. वो Jeremy Brudos. That's somebody else. Okay. That's somebody else. Ed Kemper was the co-ed killer. Co-ed killer. Co-ed killer. So Ed Kemper said that whenever I used to see a nice girl walking towards me, I used to think, wouldn't she be nice walking with me, or would her head be nice on a stick if I take her? So that constant dilemma stays in their mind all the time. They're always in that dilemma. Fascinating. When I was watching that documentary about Jeffrey Dahmer, the first time he kills, या जो प्रोजेक्शन है, और डामर ने अपने इंटरव्यूज में बड़ा खुल के बताया था, बिकॉज उसने कोऑपरेट बहुत किया था और उसको एक पॉइंट पे रियलाइज भी हो गया था कि वो नॉर्मल नहीं है और उसको पता था आई वुड डिजर्व डेथ, वो बोलता ही था. तो उसने बड़े क्लियरली समझाया था कि भाई सो ही वांटेड टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मेन एंड ही वाज होमोसेक्सुअल. तो द रीजन ही किल्ड the first man he killed was because he just wanted it to be still. He just did not want him to move. And when he had achieved that by hitting him on the head and killing him, he wanted to preserve it somehow. The fear of losing. Yeah. Everybody was leaving. His parents were going through separation. Yes. And he was not able to have friends. He did not have a regular life. He wanted to keep that person in his life. And there was no other way to it. You and I would not think like that. But for him to have that person with him forever was that way. तभी शायद वो श्राइन बनाता था और वो मेमेंटोस ट्रॉफीज रखता था. ट्रॉफीज में मेमेंटोस में फर्क है. Okay. डामर तो आई थॉट मतलब एटलीस्ट जो प्रोजेक्शन दिखाई है उसकी was sentimental about his victims. He was attached. He was attached. और see उसका अगर आप देखेंगे तो early days of upbringing बहुत turbulent थी. बहुत turbulent थी. He was seeking affection from his father. Yes. The mother was rejecting, and the same is the case with Charles Shobraj also. So that was not happening. And वो dissection जो उसने early days में किया वो अपने father से ही सीखा उसने. The father was a chemist or something. Yes, similar. So now he grew up and he was not getting that kind of attention that he was wanting. And if you remember, when he goes to a shop, he gets a mannequin also. And, Yes. and gets it to his grandmother's house. Yes. Right? Yes. So he was looking for a company, but because he could not process emotions the way you and I could, he did not know where to stop and how to go about it. So that mental distress was propelling him, and you could not help it. When Ed Kemper was asked what should be done to you, he said, you should kill me or electrocute me in the chair, because there's no other way to it, because they don't know what to do. Not everybody is smart like Ted Bundy. Ted Bundy, Not everybody is smart, or Charles Shobraj. or Charles Manson. The Charles Manson too was killed. He was killed. In jail, no? He was killed in jail. He was arrested. No, he was a cult leader. Cult leader, but also मतलब clearly psychopathic. He was a psychopath, hypnotic. Hypnotic. He was hypnotic. Yeah. His stature was small, like Hitler. Yes. But The charisma. the charisma that he had, he would sit on a hill and he influenced young students Yeah. to go and kill a Hollywood actress, Sharon Tate. And they killed. And I think they wrote death to the pigs, something of that, with her blood on the walls. So इतनी तो influencing power है. there is a way of it, no? There was drug also involved in it. There was sex involved in it.
and he had a manner of speaking. जब वो FBI agent से भी बात करता है तो you are let's say 6 or 6'1", Yeah. yeah, and let's say I am 4, तो अभी तो मैं छोटा हो गया and you are taller than me, तो how do I go about it? टेबल पे बैठता है ना वो यहाँ पे ऊपर, हाँ. he'll sit on top, then he'll talk, then he is giving you a sermon on the mount, so that's how he talks. The Messiah complex. The Messiah complex. So he wanted to be that, and the agents let him do that. If you want the other person to feel that, let them have that control. Yeah. That person will feel more powerful. But yes, Charles Manson was a very, very disruptive, interesting phenomena. I don't know whether I should say this or not, but cult leaders have this. Now, I'm not going to equate it, but Osho seems to have similar characteristics. The way his charisma, at least charisma के point of view से, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ उसने वो करा, charisma की बात कर सकते हैं, और the way जितना उसका hold था, उस level की बात कर रहा हूँ, मतलब I'm not equating him with any crimes, but वो magnetic aura और वो charisma तो था. See, when I see you're very good with choice of words. बहुत अच्छा आपका segregation है. No, that tells me कि आपका जो PFC है, prefrontal cortex है, वो तो बहुत अच्छे control में है. You are there at the steering of it. For Osho, I'll tell you, he had that aura. He had that magnetic personality. See, if I look at you, my normal thing is I'd look at you, then I look away. He'll look at me and he'll look away. But he'd look at you. And if somebody looks at you and keeps looking at you continuously, you feel, that person makes you feel that, he has his eyes only for you. And he'd keep looking and there'd hardly be a blink. And there's a video also wherein you can see that when he talks with both his eyebrows up. हाँ, एकदम आंखें एकदम. Both his eyebrows up, seeking his confirmation that do you agree with what I am saying? Yes. And there's no eye blink rate at all. Yes. We can't do that. We can't talk without blinking our eyes. The eyes need moisture. But there was a magnetic thing to him that when a person talks like that to you, you want to listen. It also, I think, somehow has the effect of you feeling like you are the center of the universe. Excellent. In today's times, my question to you. Yeah. You know it, but still, what do you think that the average human attention span is? For how many minutes? It must be in seconds. I don't know. Great. Yeah, how many seconds? I don't know. 7? 5? Excellent. So, the answer is right. The last research that was done was 8 seconds. We have an attention span of 8 seconds and the goldfish has 9 seconds. 9. उससे भी कम है. उससे भी कम है हमारा. Right? तो क्योंकि हम वो Instagram की reel 30 seconds की we can't watch. In that era, when somebody is looking at you like that, continuously, for minutes, with no distraction, you will be given to the other person. Mesmerizing. It will be totally mesmerizing, hypnotic, enchanting. You can't help it. भाई जैसे for people like Charles Manson, let us not put Osho in that sentence, but for people like Manson, इतनी strong aura होती थी और इस टाइप की स्टेयर यूज करते थे वो. The thing is that अगर आप उस टाइप की स्टेयर को कपल कर दोगे वो वर्बल इंटेलिजेंस के साथ, then you can pull it off. नॉर्मल इंसान वो स्टेयर करेगा तो पत्थर मार के बाहर फेंकेगा उसको. It is like sitting like a leopard, sitting on top of a mountain and trying to see which one is the weakest amongst the pack of the deer which is running. Yes. And pounce on that one, playing with the psychology of the others. So, and then they feed on it. So, which you very rightly said, body language or reading the other person is one thing, but using the right words, knowing that what is it that will work with him or resonate with him, that will drive the point. अब ये देखो कि वर्बल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा हाई थी इन लोगों की. The way they spoke. I mean, अगर ये वायलेंट ना होता है तो he could have become a congressman. Ted Bundy wanted that. Ted Bundy wanted that. That's right. The more interesting question is how many people have figured it out, did not go into killing, became congressmen and are still running the world. That's right. And quite a few. Yeah. And quite a few. That just reminds me, Ted Bundy was so charming that the judge who gave him the final sentence,
because he had also done his law. Hmm. So told him, partner, I wished I saw you practicing it over here than to get sentenced over here. So the judge also came under his Influence. and charm. Such was the charm. If the judge can come, what will happen to the girls? Very deadly, no? Dangerous. Educated, good looking, has the right way of approaching, and knows how much to talk. Very important. These people are good listeners. You have to be a good listener for you to be a good communicator. चार्ल्स सोबराज ऑल्सो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. और वो जो एक वीडियो आपने दिखाया जिसमें वही है, डेथ स्टेयर है उसकी, साइकोपैथिक स्टेयर है, एंड ही इज स्माइलिंग. एंड तो व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट चार्ल्स सोबराज? Again, another child Yeah. who has a very troubled upbringing. Okay. And his father was a rich businessman, Horchand Shobraj, and his mother, I think she was Vietnamese, and Indian, Vietnamese, and then the stepfather was French army man. That's how he grew up. But early days में क्योंकि there was disturbance, he ended up committing crimes. Then later on, he moved to killing people. He's Right. killed quite a few people, but there's no remorse. वो remorse नहीं है. कोई remorse नहीं. किसी का भी पासपोर्ट लेके, these are early days, उसमें अपनी फोटो लगा के, एंड फिर उस पर्सनैलिटी को impersonate करना. I tell you that right now your name is Mohit, and you have to believe you're Mohit and clear the airport with the name Mohit, saying that you're a professor of history. It is a hard thing. And he would do that with multiple personalities. It's not an easy thing for an average individual. And he could do that. And he said in early days, I studied psychology when I was in juvenile home. And with psychology, I learned how to desensitize myself from emotions. So if there was a crime that I committed, I did not feel weighed down by it. I was liberated. So he used education to desensitize himself. And his victims were mostly women. All women. Mostly women, men also, and the same modus operandi, mixing something in the tea, and once they'd have it, then they would faint, and then you would take away their belongings and kill them. There was no remorse at all. No remorse at all. He admits to the fact that he's taken passports, but he never admits to the fact that he's killed anyone. But he does admit to the fact that he has drugged. But आप करिश्मा देखोगी, जब वो जेल में था अभी, रिसेंटली तक, तब भी लड़कियां मर रही थी उस पे. जेल के अंदर भी मर रही थी. अंदर भी मर रही थी. एंड जैसे कि अगर वो आपको देख ले एंड ही वुड टॉक टू यू, he would always be smelling very nice. दूर से you will get his scent. He knew multiple languages. He was good looking and he knew what to say to whom. Well, he had social intelligence. Yeah. That is very important. I was listening to a Harvard professor. I've forgotten her name. She said those people who are extremely successful in life, they really do not know that they reached there because of TALK, which is talk. They knew what to talk with whom. And that is why they've reached there. But people don't value this. You need to know what is it to talk to with whom and you'll get your target. In his case, it was victims. In our case, it is business. It's different. Yes, but हाँ, but ये रियलिटी बिल्कुल सही है. और साइकोपैथ्स इसको एग्जिबिट करते हैं कि ये दुनिया एक अजीब सा चेस बोर्ड टाइप का है, जिसमें आपके चेस प्लेयर सारे के सारे आर अदर पीपल. And you navigate other people. You don't navigate jobs or careers. You navigate people. And they make it better every time. Yeah. I'll give you an example. Ed Kemper. अगर जैसे आप मुझे बाहर दिखते हैं, ऐसी dressed in a metro. So I'm thinking you're going to office, आप busy हो. So Ed Kemper in those days, he would pick up hitchhikers. And when he would go in his car, he would be dressed in a suit like this, wear a watch, and सामने वाली सीट पे he would keep a stuffed toy. So that you would think कि मेरे पास कोई घर पे बच्चा है घर पे, है ना. So there's no problem in taking a lift from a father, family man. So camouflage. हाँ, it's a camouflage. And you'd ask कि you want a lift? So he'd said quickly because I'm wearing a formal suit and I keep looking at my time, so you know that I'm in a hurry. I'll not do anything with you. So they agree. Easy. And every time it was to build up the stakes and kill somebody more in a difficult situation. Yeah. तो डामर क्या करता था? अगर मैं, how would you describe it? I would say कि अगर आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो वो there is this afro guy, वो उनके रूम में एंटर करता है.
ही ट्राइज टू गेट इंटीमेट विद हिम, पर उनके माइंड में एक रिचुअल है दैट ही वांट्स टू गो थ्रू. इन द मीनवाइल वो पिछले किल से भी कुछ पीसेस रखे हुए रेफ्रिजरेटर में दैट ही वांट्स टू प्रॉब्ली ग्राइंड एंड यू नो तो ईट. एक पॉइंट के बाद जेफरी डार्मर वाज किलिंग और उसके बाद उनके बॉडी पार्ट्स काट के पका के खा रहा था वो. हाँ, पका के खा रहा था. और उसकी रिपोर्ट काफ़ी नेबर्स ने करी भी थी कि स्मेल बहुत आती है. कि स्मेल बहुत आती है, बट नोबडी वाज टेकिंग इट सीरियसली टिल द टाइम ही वांटेड टू बी हेल्प फॉर दैट मैटर. जब वो पकड़ा भी गया तो उसने ऐसे किसी को ब्लेम नहीं किया, रेजिस्ट भी नहीं किया है ज़्यादा, बट मार देता था, उनकी बॉडी पार्ट्स रख लेता था, उन्हें खा लेता था. दैट वाज हिज वे ऑफ पोजेसिंग. देयर वाज आल्सो ट्राइंग टू हैव सेक्स विद डेड बॉडीज, यस. सो दैट वाज आल्सो देयर. टेड बंडी भी करता था ये. टेड बंडी बट भी टेड बंडी का था कि अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना. हाँ, सो इसमें एक मैं नेम लेना चाहता हूँ. अगर आपने माइंड हंटर्स देखा है, सो देयर इज अ लेडी दैट इज शोन दोनों के अलावा. यस यस. रियल लाइफ में हर नेम इज प्रोफेसर एन बर्जेस. ओके. Okay, and so she was a forensic nurse. She said rape is not about just lust. Rape is about power, domination and control, PDC. So all of these men who ended up committing crimes like these, they wanted to establish their own power and domination and control, and less about lust. Yeah. So वो domination जो टेड बंडी की, जो विद डेड बॉडीज, क्योंकि नाउ दे कांट रेजिस्ट. अर्लियर तो दे वर रेजिस्टिंग. नाउ इवन विद डामर, नो हू विल रेजिस्ट यू नाउ? नोबडी, बिकॉज देयर इज नोबडी अलाइव, सो दे कैन डू इट विद. Then there was this another guy after Ted Bundy, what's his name? Night Stalker. Fred something Ramirez. रिचर्ड रैमिरेज. अरे पे ये वेरी गोरी. घर में घुस के मारता था विद एनीथिंग, किसी भी चीज के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, सोते हुए लोगों को. हाँ, देखिए इसमें ना आपकी अर्ली एज का एक्सपोजर मैटर्स अ लॉट. वन ऑफ हिज कजन्स एक्सपोज्ड हिम टू अ लॉट ऑफ वायलेंस इन द अर्ली डेज. ही वाज प्रेजेंट इन वन ऑफ द वॉर्स. ही वाज, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द सोल्जर्स समवेयर. उसमें और एक सिमिलैरिटी, बड़ी ईरी सी सिमिलैरिटी. एक तो रिचर्ड रमीरेज वाज एंटी क्राइस्ट एंड वो सेटन, वो भी कल्ट में थे. कल्ट. एंड ये अभी इंडिया में भी जो एक हुआ है मर्डर, दिस कपल किल्ड मैन जो बाहर रहता था, मर्चेंट नेवी में था, एक लड़की और एक लड़के का अफेयर था, और उसको बाहर से बुलाया और उसको सिस्टमेटिक तरीके से मारा. और वो जो लड़का था उसके कमरे में देयर वर ऑल दीज सैटेनिक टाइप ऑफ, डिमोनिक टाइप ऑफ इंक्रिप्शंस एंड ड्राइंग्स ऑन द वॉल एटसेट्रा. को केस पता है? वो वाला केस मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है. बट आई टेल यू, कई बार लोग उसका एलिबाई की तरह भी यूज़ करते हैं कि आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट सैटेनिक पावर्स. आई गिव एन एग्जांपल ऑफ सन ऑफ सैम, डेविड बर्कोविट्स. उसने बोला मैंने लोगों को इसलिए मारा क्योंकि नेबर का डॉग, it would bark, and when it would bark it would tell me go and kill. I had to follow those orders. So मैं तो उसकी barking पे kill कर रहा था. Later on it was proved that he did not have any mental disorder, but people use that also. अच्छा, वो तो लीगल डिफेंस एक यूज करने वाली बात है. लीगल डिफेंस यूज करते हैं. There was this guy called Harold Shipman, Dr. Harold Shipman. He may have killed 250 patients. I think he was called the Angel of Death or Doctor Angel Death. of Death. हाँ, he killed. और इंडिया में भी तो होता होगा, कहाँ नहीं हो सकता है. तो मतलब इंडिया में भी हुआ ही है, कोई डॉक्टर या कोई नर्स लोगों को पॉइजन. और इंडिया में तो इतना ओवरसाइट भी नहीं है, पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा होगा. ऐसा पब्लिश्ड तो आर्टिकल नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ह्यूमन. एंड जो वो उन्होंने किया, एंड इसमें एक नर्स भी थी, एक ब्रिटिश नर्स थी, आई फॉरगॉटन हर नेम. हाँ. There was a British nurse also. Yeah. That character of Nurse Ratched is, I think, something based on her to some extent. हाँ, so where she would let the babies die. अच्छा. She would let the babies die, and she would say, I tried my best and what not, but should not do anything. Quite a few babies were dying in her ward. That is when they took an interest. Why are babies dying in this ward only? So it's a British case. मतलब ये तो प्योर ईवल है ना. हम बोल तो रहे हैं कि अब ये इंटरेस्टिंग, मुझे पता है ईवल इज अ वर्ड विच हैज एथिकल टोन्स एम्बेडेड इन इट. Right. तो
बट और कैसे हम इसको देखें, एक नॉर्मल इंसान इसको और देख कैसे सकता है सिवाय ईविल के लेंस के? ईविल एग्जिस्ट करता है। हाँ सी हम अभी ऐसे तो जैसे हम लैंग्वेज कर रहे हैं ना यूज, हम्म कि भाई इसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर सकता और इसको वो फील नहीं होता, या ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, या इसका मिगडेला छोटा है, कहीं ना कहीं तो हम मॉरल एजेंसी उससे ले रहे हैं एंड वी आर ब्रिंगिंग इट टू द न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ इट। दैट्स राइट। बट मॉरल एजेंसी के लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये लोग एंजॉय करते हैं उसको। सी एकदम से ब्लैक एंड वाइट शेड्स में देखना बहुत डिफिकल्ट है, because in order to understand a person you need to understand their background also. See, from our lens definitely it is evil जो किया, by moral standards it is no way right to take away somebody's life, पर उसके पीछे क्या क्या ट्रांसपायर हुआ, क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ, we would never get a deeper dive in it to understand. However, that never explains it, but why did that happen is something that needs to be asked. But yes, it is. You know, perhaps a more disturbing question Yeah, that comes to my mind is, अभी हम तो बात कर रहे हैं साइकोपैथ्स की, that's right. but the banality of evil is what scares the hell out of me. रोंगटे खड़े कर देते हैं ना चीज, वो है banality of evil is of course Hannah Arendt। कहने का मतलब है कि नॉर्मल लोग are much more capable of evil and coarse evil than you can imagine. Take the Nazi Holocaust. Yes, excellent question. आपने मुझे साइकोलॉजी की तरफ ड्राइव कर दिया। सो उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, स्टैनली मिलग्रम एक्सपेरिमेंट, वो भी दैट स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। ह्यूमन नेचर एक्सपोज करता है, बट प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज आप बताइए क्या होता है उसमें। जी, सो स्टैनली मिलग्रम एक्सपेरिमेंट येल यूनिवर्सिटी में हुआ, एंड उसमें दे टोल्ड पीपल दैट यू विल हैव टू गिव आंसर्स, और एक इंडिविजुअल को एंड पेयर, जैसे कि शू सॉक्स, राइट, टी शुगर, ऐसे करके, एंड यू हैव टू गिव द राइट आंसर। दो लोग साथ में हैं, उसमें द पर्सन हुज गिविंग एन आंसर एंड द एक्सपेरिमेंटर, दे आर टुगेदर। सो व्हेन दे टुगेदर, द पर्सन हुज आस्किंग द क्वेश्चन डजंट नो दैट दे आर हैंड इन ग्लव्स विद ईच अदर। दे डू द एक्सपेरिमेंट एट येल यूनिवर्सिटी, और हर रॉन्ग आंसर पे, एज यू नो, 15 वोल्ट्स का शॉक देना है। हाँ, शॉक दे सकते हो, और इंक्रीज होता जाएगा, 15, 30, 45 goes up. 65% and above population gave more than 300 volts of electric shock to people. Nobody was getting killed क्योंकि उन्होंने वो leads निकाल दी थी in the other room. but actors थे वो, and they were displaying pain. They were displaying pain. This guy never knew. He thought they're actually getting killed. हाँ, और yeah, वही मतलब अथॉरिटी फिगर है। दैट्स राइट। और जैसे आपने कहा अथॉरिटी फिगर है, और दूसरा उन्होंने ऑलमोस्ट किल कर दिया, सेम हॉलोकॉस्ट ऐसे ही हुआ। नेबर्स एंडेड अप किलिंग नेबर्स ओनली बिकॉज ऑफ एन अथॉरिटी फिगर। और दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट बाय फिलिप जिम्बार्डो। few people became the guards, few people became the prisoners, and they started thinking like one, and then they started surrendering to authority figure, and authority started to oppress and abuse. That's the more dangerous part. I think anybody who wears the uniform, I have worn it, and anybody who's been on the other side of the law, there is a slippery slope. I absolutely agree with it. And इसमें ना बहुत interesting है, there's a thing called white coat syndrome. You go to a doctor's place and you see his white coat, and automatically the blood pressure goes up. I don't know why is he seeing me for a long time, is there a problem? So hypertension, blood pressure increases, but when you come back home the blood pressure comes down. It is same with the authority. Anybody who wears a uniformed coat, there's hypertension. So anybody who's called to police station or any other place, they feel anxiety. That doesn't mean they're being deceptive, they're just being anxious. So you really don't know. That is called Othello error. I see. From William Shakespeare. You remember that how Othello killed Desdemona, thinking that she's anxious and she's lying to me, but actually she was just being anxious. She was anxious because of him. Because of him. So that's called Othello error, coined by Dr. Paul Ekman. Interesting. The fear of not being believed, so you get anxious and you might come across as It happened deceptive. to me once, you know. Okay. Weird thing that happened to me. Okay. Embarrassing also. I'm all ears. So, I went to Canada, right, a few years ago, and I don't know what happened to me when I was in front of that immigration officer.
and he asked me, what do you do? And he was a customs officer, and I told him I was a customs officer, and for some reason I started to sweat. And then he started to talk to me and I started to sweat more. वो शायद इसलिए क्योंकि एकदम से ठंड लग रही थी बाहर, प्लेन से बाहर निकले, बहुत ठंड होती है वहाँ पे कनाडा में, और जैकेट वैकेट मैंने पूरी पहनी हुई थी, और फिर अंदर से एकदम से सेंट्रली एयर कंडीशन हो गया वो, तो पसीने वसीने छूट गए मेरे, और वो एम्बेरसमेंट हो गया. तो उसने एक और को बुलाया हुआ है, इधर है यार, he called his buddy, this guy is a customs officer. तो वो दूर मेरे और पसीने छूटे. So yeah, it was very embarrassing, and then ultimately they figured that no, he's okay. Okay. So yeah, but it was weird. It was very, very thin. They could have told me, you know, Yeah. कि आप थोड़ा सा अकेले में बात करते हैं, आ जाओ आप. Correct. I think in UK, too much of yawning at the airport is a red flag. Oh, Yawning is not just because you're sleepy. ऑक्सीजन मांग रहा है दिमाग. हाँ. Stress. So you are a psychologist yourself. नहीं. But you hit the nail on its head almost every time. Interesting है ना ये सब कुछ. बहुत बिल्कुल वही. You yawn is to buy yourself time, deflect. The brain is wanting oxygen. So too much of yawning at the UK airports, red flag. They'll flag you. So as you said, sweating is one, but ये तो वो भी काउंट करी जाती है. But I'm glad आपने वो कोरिलेट कर दिया ओथेलो एरर को. नहीं, ओथेलो एरर डेफिनेटली होता है, एंड आई प्रिज्यूम कि इंटेरोगेशन में तो बहुत ही ज़्यादा होता होगा. अगर बुलाते भी हैं किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन में, द पर्सन इज एंशियस, उसको डर लगता है. Of course. एंड दे फील कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, एंड द नॉर्मल फीलिंग इज एंजाइटी, एंड एंजाइटी इज नॉट ऑलवेज डिसेप्शन. दो ब्लड प्रेशर विल गो अप इन बोथ द प्लेसेस, बट यू हैव टू डिस्टिंग्विश. जैसे आप कह रहे थे, यू नीड टू सी द बेस लाइन. एंड हाउ विल यू सी द बेस लाइन इफ द पर्सन इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड? सो बेस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन. इंटेरोगेशन में इवन मोर सो. All the more. Yeah. All the more. Yeah.